तो हेलो भाइयों एंड बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आकाश प्रजापति में। तो आज हम देखने वाले हैं एलएलबी का सब्जेक्ट लीगल हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट विच इज द सेटलमेंट ऑफ सूरत। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1600 एंड 1609 एंड द सेटलमेंट ऑफ सूरत इन द डिटेल। So let's jump into the topic and let's start the video. But before that, please subscribe to my channel आकाश प्रजापति और नोटिफिकेशन बेल चालू कर देना जिससे आपको मेरी वीडियो पहले मिले। So let's start the video and let's jump into the video. The settlement of Surat was held in 1613. So before that we will be discussing about the Charter Act of 1600. So the Charter Act of 1600 was written or was issued by the Queen Elizabeth I, who was the Queen of the Britain or England, whatever we tell, in which the Queen Elizabeth gave the privilege or some privilege to the East India Company for the trading in the India. And after some time in 1609, the King James I issued the Charter Act of 1609 by continuing the privilege of the 1600 and with some more power. ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्वीन एलिजाबेथ वन मैंने दिया नहीं हुआ, विद जेम्स किंग जेम्स वन भी मैंने नहीं दिया हुआ, वो आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। So let's see the settlement of Surat now. So after landing in the India, the Britishers' primary task was to find out some suitable place, एक ऐसी suitable जगह find करे for the center of its trade. It was the primary task of the East India Company, or we can say the Britishers. So they selected Surat. So why they selected Surat was because it was an important commercial center. सूरत एक important commercial center था with सूरत को स्टेटस मिला हुआ था इंटरनेशनल पोर्ट का दैट द सूरत वाज एन इंटरनेशनल पोर्ट, इसलिए उन्होंने सूरत को सिलेक्ट किया. नाउ लेट्स सी another thing that the Portuguese have already acquired or equipped a place for its trade. So Portuguese cannot tolerate any interference from the Britishers in his commercial activity. So Britishers and Portuguese came across the battle, and in 1619 Britishers and Portuguese done battle and Britishers defeated Portuguese. So Portuguese को डिफीट कर दिया था इन 1612 में ब्रिटिशर्स ने. एंड इन 1613 जहांगीर issued the फरमान and permitted or gave permission to create the factory in the Surat. So from this all we can see that the Surat was the first place where Britishers established their first factory in India. सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा. So what was the factory, what was the thing which is including in the factory? The factory आज की फैक्ट्री जैसी नहीं थी, like for the manufacturing purpose. Factory was having the residential area, warehouse, godowns, manufacturing area and etc etc. आज की फैक्ट्री जैसे नहीं थी. ब्रिटिशर्स वॉज गवर्न बाय देयर ओन लॉ. नो नेटिव लॉ वॉज बी implemented or was implemented on the Britishers or Englishmen. We can see that the many factories were made in the territories of the मुगल के टेरिटरीज में बनाया गया था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन लेनी
पड़ती थी मुगल एम्परर्स से टू क्रिएट द फैक्ट्रीज और factory and to carry on its trade in that territories. इसलिए हम वेरियस सेटलमेंट देखते हैं लाइक सेटलमेंट ऑफ मद्रास, सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे, सेटलमेंट ऑफ कलकत्ता एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which will be discussed in the further videos also. So please subscribe to my channel, and if you are liking this video then you can like this video, subscribe to my channel, and another videos will be also posted on this channel. And now in 1615 it is an important thing, you have to learn it. Don't just forget, you have to learn it by your heart. So in 1615 on 8th September, remember this date, remember this year, King James I, remember this also, Saint Sir Thomas Roy, remember these names, this 8th September 1615, James I, Sir Thomas Roy. You have to remember this for writing in your exam, by which you will be getting or you will be scoring good marks. So Sir Thomas Roy को भेजा गया था by the James I to India. So who was the James I? He was the king of the Britain. Or Sir Thomas Roy was then first ambassador of the James I, who came to India for Jahangir's court or to Jahangir's court. Or Sir Thomas Roy had stayed in India till the end of the 1618. During this period from 1615 to 1618, he done some work. Let's see what work he had done. So he obtained permissions for the opening factories and doing some trades uh, in the empire of the Mughals, like आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ सब जगह भी फैक्ट्रीज बनाई गई थी, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ट्रेड किए गए थे, और बहुत सारी जगह थी जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया इस वाली लिस्ट में. ओके, एंड इन Feb 1619 Sir Thomas Roy left the India. He came here to Sir Thomas Roy यहाँ आए क्यों थे, तो some consent या concessions लेने from the Mughal emperors, and he was also successful. ये देखा जाएगा कि हाँ ये successful हुए थे ये सब कुछ लेने के लिए. So let's see what's the concession he took from the Mughal emperor. The concessions are 3. So let's see. The first concession is given by the Mughal emperor in the treaty settlement of 1618. And what was that? So the Englishman was allowed to live according to their own laws. लूज लिखा हुआ है, लॉ है, LAWS है, ठीक है. बाय देयर ओन लॉ, विद देयर ओन लॉ, रिलीजियन और रीजनल और लोकल इंटरफेरेंस वो कुछ भी नहीं हो सकता था विदाउट एनी रीजनल और लोकल इंटरफेरेंस. और ये पूरा प्रिविलेज और ये पूरी पावर उनको मिली थी अंडर द ट्रीटी सेटलमेंट ऑफ 1618. Two more things, that the dispute amongst the Englishmen would be settled by their own tribunal, यानी इंग्लिश लॉ या तो खुद के कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में वो डिसाइड करेंगे. नो कोई भी यानी डिस्प्यूट वो जहांगीर कोर्ट तक नहीं जाएगा कि जहांगीर्स के कोर्ट तक. सो वन मोर थिंग, दैट द ब्रिटिश इंग्लिशमैन या ब्रिटिश मैन या एंड नेटिव, ब्रिटिश मैन एंड नेटिव के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व किया जाएगा बाय द लोकल नेटिव अथॉरिटी लाइक काजी. और यहाँ पर एक और चीज समझ लो कि काजी को ऑर्डर मिला था फ्रॉम द मुगल एम्परर टू ट्रीट इंग्लिश मैन विद द रिस्पेक्ट, यानी उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, यानी कोई उनको आड़ा टेढ़ा कुछ बोलो मत. सो काजी वॉज अंडर द प्रेशर ऑफ द मुगल एम्परर टू ट्रीट द इंग्लिश मैन विद द रिस्पेक्ट. ये आपको समझना चाहिए. तो यही था एक अपना सूरत सेटलमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं था. इट सूरत सेटलमेंट इज वेरी शॉर्ट. एंड इफ यू वांट दिस नोट्स एंड PDF, सब्सक्राइब टू माय चैनल.
लिंक मैंने आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, जस्ट मैसेज मी ऑन दैट कि हाय आई वांट द सेटलमेंट ऑफ सूरत, बस इतना लिखो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये वाले पूरी, मैं आपको भेज दूंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. सूरत सेटलमेंट हैज़ बीन कवर्ड इन जस्ट ओनली 10 minutes, and another videos will also be coming on this channel, like settlement of Calcutta, settlement of Madras, settlement of Bombay, and another settlement acts and all that. So do subscribe to my channel and like the video, and please press the bell icon, and please follow me on Instagram, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहता हूँ एंड सम नॉलेजेबल शॉर्ट्स भी भेजता हूँ. सो डू फॉलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अनदर सेटलमेंट. थैंक यू.